आपको ध्यान दिला दूं, इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से लगभग 22 मिनट दूर हैं। जो दर्शक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, आप लोग इस ऐतिहासिक पल को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। Honorable dignitaries, delegates, scientists, media personnel, and dear viewers, a very good evening to all of you. We at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayan 3 mission landing event on the lunar surface. These are the visuals from Mission Operation Complex at ISRO's Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, situated in Namma, Bengaluru, Karnataka. I, Arushi Seth, and my colleague, Dr. Padamdeo Mishra, are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from powered descent start to touchdown. Today, we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan 3, wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of power descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on Moon's south polar region. These display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module. A sense of quiet, calm descends on the control center. There's going to be very spare commentary coming in from there. Noise levels are going to be kept to a minimum as we now await the latest live information streaming in from the from the Vikram lander. Obviously, it's not going to be live video information because there will be a lag before imagery and video footage actually comes in, if any, and when ISRO chooses to actually put it out. But telemetric data will be displayed on the screen for people to understand where things are at and what the status is. In fact, I want to bring Rajchingappa back in. Okay, we just go back to this and I'll come back to our guys. किया जा रहा हो। इसरो मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है, जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है। लेकिन ना हम थके ना हम हारे। हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशन को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, जो इसरो का दूसरा मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग 4 साल बाद या चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही Live images coming in from inside the ISRO command center in Bengaluru. I want to bring in India today's Bengaluru Bureau Chief Nagarjun, who is with there. He's just a few meters outside this particular place where the viewing gallery is. Naga, the telemetry data has begun to come in from the Vikram lander. 37 minutes to go for touchdown. Only a few more moments to go for the the automatic landing sequence to be initiated. The screen behind you has information. What are you hearing? What's the mood there? Only 37 minutes to go, Naga. That's true, absolutely. 37 minutes to go and around 18 or 16 minutes to go for the power descent. At
5:44 p.m. is when the power descent will begin. We can see the scientists and the command center have all seated in their chairs right now. Let me break down some figures for the viewers as well. When the lander reaches the designated spot where it starts its descent, it would be traveling around 6,048 kilometers per second. So that's almost more than the speed of sound as well as Mach 4, Mach 5 speed. That velocity will have to be reduced. For 11 minutes, starting from 5:44 p.m., there'll be rough braking system. So there'll be random loss of height from 30 kilometers where it's orbiting right now. It will come down to 7 kilometers. So there's a loss of 23 kilometers in vertical height. And from the final landing spot, when the sequence begins, it will be around 745 kilometers away. So if for example, say if I'm in Bangalore right now, if the landing spot is Bangalore, the descent will begin 800 kilometers away from Bangalore as a vertical distance and as the horizontal distance, and the vertical distance is 30 kilometers. So if you draw the curve, you can imagine the height of 30 kilometers and the horizontal land distance around 745 kilometers. 11 minutes is when the rough braking phase will happen. There'll be a big reduction in height as well as covering the ground. After that, the remaining 15 minutes will a slow descent, and final 180 seconds to 120 seconds will be the time when the radio altimeter picks up the exact spot. Radio altimeter will be the laser just coming down through the lander, picking the spot and exact the height, including nanocentimeters height will be known, and finally the landing spot will be chosen by the lander. All these commands that we are talking about, all these actions that we are talking about, has been pre-fed. They just have to initiate the process. Nothing to be done because the commands have already been pre-fed. The lander knows when to fire the retro boosters. The lander knows when to start tilting towards the vertical direction. Right now, it's still orbiting horizontally. It has to come down vertically, and this will be the last orbit ever of lander Chandrayan 3. Okay, so it's 5:29 now. So just about 15 minutes to go, Naga, before the automatic landing system engages. So 15 minutes of terror will then start, and then at 6:04 p.m., 34 minutes from now is the scheduled touchdown. There's no turning back. The point of no return has been crossed. Chandrayan 3 is going to be a success. The space-safe program is now headed towards lunar history on the surface of the moon. These are live images coming to you, mind you, from the ISRO command center. So all of the men and women you see on your screen are all part of the Chandrayan 3 program and are playing a very, very important role, not just in the entire program so far, but in this critical final phase, because in many people's minds, especially in the public mind, this program only boils down to what you're going to see over the next 33 minutes. While that is not strictly true, the program has achieved a great deal of success so far already and proven many things, many naysayers wrong. But it is this final thing that will be the cherry on top as far as India's space endeavors through Chandrayan 3 are concerned. Akshita is also in that amazing viewing gallery with that big screen that has a stream of live ISRO data that's being put out directly from the Vikram lander. Akshita, 33 minutes to go. I'm sure the crowds are swelling inside that room right now. India Today's coverage is being the most watched online and on television right now. Not surprised at all, given the great voices we had on our coverage. And now the moment of truth is before us. 33 minutes to go, Akshita. That's right. There's a very restricted crowd in here, Shiv, tracking those updates that you see behind me. I'm going to have to keep turning back to see what's happening because I don't want to miss out on any of the action. Less than 15 minutes to go. And some of the data that Nagarjun is putting out for us right now of how exactly the lander is traveling, it's astounding to say the least. We're talking about 745 kilometers being covered in a matter of 15 minutes, Shiv. So can you imagine the speed at which it's traveling? And then from that kind of a speed to come to absolute stillness and then ensure that it doesn't crash land but soft land. So from 6,000 kilometers per hour, you're going to be bringing it down to stillness. And as Naga pointed out, 4 phases where the power descends down. That's the very first phase. That's quite the longest phase of the 4. You're going to be seeing the horizontal slowly coming vertical. By the start of the 4th phase is when it's actually vertical. So when lander Vikram is vertical, he covers very little distance actually in that. He covers just
about 150 meters, and when it's vertical, it's about 800 to 1,500 meters above the lunar surface. So it's only at that point that difference from here goes to here. So it's a very slow but smooth operation that will be done. They don't have any jerks that brings it right up vertical, and they know full well how important that particular phase is here, because that's where Chandrayaan 2 kind of halted. The kind of power, the engines, the thrusters that are used, which is what Raj also referred to, that's going to be most crucial. All of that will start at 5:44 p.m. What they're referring to as in fact the automatic landing sequence that kicks off at 5:44 p.m. 6:04. That's how long it's going to last. The details that they've given us is that from about 30 kilometers height, it's going to come right down and touch down on the surface. For so many days now, Lander Vikram has been working hard, going on the elliptical orbit. It's finally get a chance to kind of rest, put his feet down, literally onto the moon's ship. 11 minutes to go for the auto landing system to engage. 15 minutes of terror. 6:04 p.m. the landing. I want to just listen into some of the ISRO commentary coming in live. System performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site, since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan 3 mission. This is a completely unedited live raw feed from the ISRO command center that India Today is showing you on our screen right now. That's a simulation of what the landing is going to look like. There will be imagery. We're getting a lot of messages, especially on social media, about whether there will be images of the landing once it takes place. But there will be some photographs once ISRO releases them. Remember, the lander itself has cameras. It has been taking photographs while in orbit so far. The latest images came in just yesterday of the moon's surface. Amazing images. And now there will be more in a short while from now post that landing. Let's just listen in once again. An explanation happening here of the landing sequence. किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, एलएचपीसी, एलडीवी और एलएचडैक का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। एलडीवी, जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लीरा यानी लेजर इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन, जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन, जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट की सीमा को बढ़ाकर 4 × 2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar
3 crore. So 3 crore is the ideal salary of prompt engineer in USA. So what is prompt engineer? Prompt engineer is a basically person who can talk to AI. And according to World Economic Forum, 10 crore jobs in the field of AI are going to pop up in upcoming 5 years. So the best thing you can do right now is learn art of using ChatGPT and other AI advancements. Hi, my name is Aditya Kachre and I am a graduate of IIT Kharagpur. Along with that, I have co-founded multiple eight-figure companies like Beat, 10x, Marathon Sport and Unitech. In my 2 hours workshop, I'm going to teach you how you can use ChatGPT efficiently by giving killer prompts. Not only this, I'm also going to teach you multiple AI tools which will make you 10x version of yourself and that will make you irreplaceable in the job market. All these things just at rupees 299. And if you register before tonight, I have also included bonuses for 10,500 rupees. So it is a no-brainer to join this workshop. Streaming workshop. Executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the power descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चले कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real time by station and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event has started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एल्टीट्यूड होल्ड फेज, जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के 2 महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क IDSN 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग 0 हो जाएगी। The scientists here at this track are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the power descent, to the start of the power descent phase. जी हाँ, अगर
अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हवरिंग करेगा। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर है। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आइडिएशन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. Hello. Hey Siri. Or Ma.
बाकी है। During this हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करेंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले। The lander imager is continuously taking photographs of the moon surface, and that is also being streamed here. Currently, the horizontal velocity has been brought down, and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers, as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर आप बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 12 kilometers. It's currently 22 kilometers, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है।
At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometers from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and cow band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase. It will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ रुचि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करेंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं। Okay, 9 minutes to go for touchdown. It looks like everything is going absolutely well. You can see a window on the top right hand side of your screen of the Prime Minister. Now, we're wondering whether there's going to be a video message from him as soon as the touchdown is complete. 80% of the lander's journey is complete. These final 9 minutes are going to be absolutely crucial, viewer. The autonomous landing system has taken over. Power descent is on. The rough braking phase is over. The fine braking is going to take place. The Prime Minister is going to be tuning in. He's watching all of this in Johannesburg. Let's go straight back to the ISRO commentary line. Let's go straight back. लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजॉन्टल बिलो 8 minutes to go for that landing. We can confirm to you, viewer, that the Prime Minister has just logged in. He's watching all of this live from Johannesburg. The fine braking of the lander is taking place right now. 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see.
absolutely tantalizing moments. Viewer, the final fine-breaking process is currently underway. The mood at the ISRO command center is absolutely electric. No smiles yet, but they're all clapping. The Prime Minister apparently has logged in. There you see it, that's the live images. Prime Minister has logged in from Johannesburg. He's in contact with the ISRO command center as well. For these final minutes, the Prime Minister is going to be there. You can see all the live positional data on the screen right next to where the Prime Minister is. This is a feed which we don't have control of. The ISRO is sending it to us, so I wish we could, focus it. There you go. That's the crucial one. Live images of, of the moon surface from the Adler camera on the Vikram lander with the information. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि So the Vikram lander has just crossed a barrier that it was unable to cross during the Chandrayan 2 mission. The very sequence that had bedeviled the Chandrayan 2 has been successfully completed by the Chandrayan 3 lander. It is about to begin its final descent towards the moon surface now. This is now the final descent. The smiles have appeared on people's faces. Let's listen. The vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, 50 meters. This is now final. The last few minutes of this descent are currently on viewer. The vertical velocity is dropping. The altitude is now only 180 meters. And as you can see in that live telemetric data, simulated data, a depiction, the lunar surface is right below the Vikram lander. 4 minutes to go for completion. That landing is likely to be executed, a few seconds before or after. It's enough time. But this is the final approach right now. You can count the number of minutes on one hand of how long it's going to take for this to be completed. 140 meters. This is ending really, really, really well so far. Let's just listen in once again to what ISRO is telling us. सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो आल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are meters, 121, 118, 112, barely 100 meters to go for the moon landing viewer. There is an absolutely electric atmosphere inside the ISRO command center. The Prime Minister has tuned in. Live picture of the Prime Minister. He's got a smile on his face. 65 meters to go for that touchdown. Everything is going beautifully at this point of time. I can only imagine the emotions, what's going through the minds of all of our scientists there at the ISRO command center. At zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering now. And now we are approaching the moon's surface. धीरे-धीरे लैंडर vertical velocity is nearly zero. It's about 2 meters per second, 47 meters. The lander has basically become like a helicopter now. It is just hovering above the surface. 31 meters, 25 meters, 23 meters, 22 meters, 20 meters above the surface. Hold on to
your seatbelts, viewer. This is it. This is the moment of truth. The Prime Minister is watching live, and here you have Vikram lander about to hit the surface of the moon. People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं। लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ है। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया। हर घर में उत्सव शुरू हो गया। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को
और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएंगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक दूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए। जल्द ही
सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित